Hi everyone, hope you are all well. Today we are going to discuss Pelton turbine. Okay, this is the whole setup of Pelton turbine, and these are the various components of the Pelton turbine. Right? So these are the various components of the Pelton turbine. In different components of Pelton turbine, we have this casing and this pipeline that is known as penstock, and this short pipe of decreasing area. This is known as nozzle, and this component is known as sphere, and this is the wheel that is known as runner, and the bucket is fixed on the periphery of this runner. These are known as vanes. Okay, so these are the different components of the turbine, and we will discuss them one by one. Okay, so first of all, let us see some important things about the turbine. The first thing about the Pelton turbine, some important things about the Pelton turbine is first thing, Pelton turbine is the impulse turbine. Pelton turbine is impulse turbine. Okay, so what is impulse turbine? Impulse turbine is that turbine in which the energy available at the inlet of turbine is kinetic energy. So in case of Pelton turbine, the energy available, or we can say only kinetic energy is available at the inlet of turbine. Only kinetic energy is available at the inlet of the turbine. So that is why Pelton turbine is the impulse turbine. Okay. The second thing about Pelton turbine is it is a tangential flow turbine. Pelton turbine is a tangential flow turbine. Pelton turbine is a tangential flow turbine. That means the water strikes the runner tangentially. We can see here, this is the runner and this is the water jet striking. Water jet strikes the runner in the tangential direction. That is why we call this tangential flow turbine. And third important point about this is Pelton turbine is the high head turbine. High head turbine. That is Pelton turbine. Pelton turbine operates under high head. So high head we say high head. In case of high head is taken from two when the head available. When the head available is from 250 meter to 1000 meter, then uh, then that sorry when the head available is from 250 meter to 1000 meter, so we call it high head. So Pelton turbine, we use Pelton turbine operates under this head, that is a Pelton turbine operates under high head. That is why it is known as high head turbine. Okay, so these were the three important points about Pelton turbine. First is that Pelton turbine First is Pelton turbine is impulse turbine. Impulse turbine means energy available at the inlet of the runner is energy available at the inlet of the turbine is only kinetic. Okay. So next thing is Pelton turbine is the tangential flow turbine. That is water. Water jet strikes the runner tangentially. So it is known as tangential flow turbine. So third point in this is high head turbine. Pelton turbine is a high head turbine. That is Pelton turbine. It operates under high head, or it is used under high head. That is, it is used when the head available is from 250 meter to 1000 meter. So these were the three important points about Pelton turbine. Now we will discuss all these components in detail. So first component which we are going to discuss is this nozzle and flow regulating arrangement. First component is nozzle and flow regulating arrangement. Nozzle and flow
regulating nozzle and flow regulating arrangement. First of all, let us see what the nozzle. Nozzle is the short pipe of decreasing cross section. Nozzle is the nozzle is the short pipe. Nozzle is the short pipe of decreasing cross section. Nozzle is the short pipe of decreasing cross section which is used to increase the काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर. और यहाँ पे देखो, जब हमारा क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है ना, तो एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो यहाँ पे देखो, जब हमारा ये वाला कंपोनेंट डिक्रीज होता है ना, तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, ये जो जब एरिया यहाँ पे डिक्रीज होता है ना, तो ये पैरामीटर इंक्रीज हो जाता है. तो इसका मतलब जब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. तो दिस वाज नोजल. और इसके बाद हमारा फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट. और फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास आता है सेफियर. फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास आता है सेफियर. ओके, तो सेफियर की फंक्शन क्या है? सेफियर रेगुलेट द फ्लो रेट थ्रू द नोजल. सेफियर रेगुलेट द फ्लो रेट थ्रू द नोजल. यहाँ पे देखो, जब ये सेफियर आगे जाता है ना, तो ये कुछ स्पेस, यहाँ ये ज्यादा स्पेस इसका कवर करता है. तो इसका मतलब वाटर फ्लो होने के लिए हमारे पास स्पेस कम रहती है. तो जिसकी वजह से यहाँ पे नोजल के थ्रू जो फ्लो रेट है ना, वो डिक्रीज हो जाता है. बट व्हेन दिस सेफियर इज मूव बैकवर्ड्स, यहाँ पे जो स्पेस है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है. फ्री स्पेस यहाँ पे बढ़ जाती है. तो इसकी वजह से जो फ्लो रेट इस नोजल के थ्रू है ना, दैट इंक्रीजेस. ओके, ये जो सेफियर है ना, सेफियर इज यूज्ड टू regulate the flow rate through nozzle. Sphere is used to regulate the flow rate through nozzle. Okay, and तो इसके अंदर क्या है? when it moves forward, the flow rate through nozzle increases. When it moves forward, flow rate through nozzle decreases. When this sphere moves in the forward direction, flow rate through this nozzle decreases. Okay, and vice versa. Vice versa means when it moves backwards, the flow rate through the nozzle increases. Okay, so this was nozzle and flow regulating arrangement. After this, we have runner and buckets. This is the runner and these are the buckets or vans. So this is the nozzle and flow regulating arrangement. Next thing which we have, second component which we will discuss is runner and vans. Runner and buckets. First of all, runner and buckets. Okay, so what is runner?
Runner is the circular disc. Runner is the circular disc. Runner is the circular disc on which vanes or buckets are fixed. On which buckets are fixed. Runner is the circular disc on which these vanes or buckets are fixed. Okay. So, what are these buckets? What are these buckets? ये जो buckets है ना, buckets are the double hemispherical cups or bowls. Cups or bowls. Buckets are the double hemispherical cups or bowls fixed on the periphery of the turbine. Fixed and evenly spaced. Fixed and evenly spaced. Evenly spaced on the periphery of the turbine. Evenly spaced on the periphery of. Buckets are the double hemispherical cups. Buckets are the double hemispherical cups or bowls fixed and evenly spaced on the periphery of the turbine. Evenly spaced means the space between two buckets is uniform. Is uniform throughout. Okay. Okay. One thing here is double hemispherical cups or bowls. Double hemispherical cup or bowl. It means this shape. The bucket, ये जो यहाँ पे बकेट फिक्स होता है ना, ये जो यहाँ पे बकेट इस तरह से फिक्स होता है, अब हम इसको अगर ऐसे देखेंगे ना तो इसकी शेप इसकी शेप जो है ना इस तरह से होती है. दिस शेप इज नोन एज डबल हेमिस्फेरिकल बाउल. Double hemispherical cup or double hemispherical bowl. It means two spheres are connected in this way and they are separated by a boundary and this boundary is known as splitter. यहाँ पे ना इनके बीच में एक बाउंड्री होती है, ठीक है. इन दो हेमिस्फीयर्स के बीच में यहाँ पे एक बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटर. और जब वाटर इस यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं ना, जब ये वाटर जेट इस वैन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इस तरह से स्ट्राइक करता है. ये जो वाटर जेट है ना इस सेपरेटर के ऊपर स्ट्राइक करता है. तो स्ट्राइक करने के बाद हाफ जेट यहां से फ्लो होके यहां से बाहर निकलता है और हाफ जेट यहां से फ्लो होके यहां से बाहर निकलता है, ठीक है. सो दिस शेप इज नोन एज डबल हेमिस्फेरिकल बाउल. यहां पे तो परफेक्ट शेप नहीं बनती क्योंकि इसके बीच में ये थोड़ा सा आगे होता है. ये यहाँ पे इनके बीच में जो है ना, इन दो हेमिस्फीयर्स के बीच में यहाँ पे बाउंड्री होती है तो दैट इज नोन एज स्प्लिटर, ठीक है ना. तो दिस इज डबल हेमिस्फेरिकल कपल बाउल fixed and evenly spaced on the periphery of the turbine. Periphery of the runner, sorry. Here we have periphery of the runner. ये जो हमारा व्हील होता है ना इसकी पेरीफेरी के ऊपर ये फिक्स होते हैं. periphery of the runner. Okay. तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये जो ना ये वाला सेटअप, ये जो ना ये वाला कंपोनेंट, ये जो टरबाइन है ना कैसे रन करता है. यहाँ पे देखो नोजल से वाटर जेट निकलता है, इस बकेट के ऊपर से ट्राई करता है. तो बिकॉज ऑफ विच दिस रनर स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड with this runner a shaft is fixed here. When the runner starts rotating, the shaft also starts rotating and this shaft is fixed with the generator. And the rotation of the shaft also runs the generator, which converts the shaft power into electrical power. Okay, so this way this setup functions. तो क्या हो जाता है इसके अंदर when a water jet strikes the bucket, when a water jet strikes the bucket,
runner starts rotating, runner starts rotating, runner starts runner starts rotating, and with the rotation of this runner the shaft connected to the runner also rotates, और ये shaft यहाँ से generator के साथ connected होता है, तो जैसे ये shaft rotate करता है ये shaft की rotation इस electrical generator को भी operate करती है, इस electrical generator को भी run करती है, तो because of which the shaft power is converted into electrical energy. So when water jet strikes the bucket, runner starts rotating. The shaft on which runner is fixed, the shaft on which I will write here, the shaft on which runner is fixed also starts rotating, okay. तो जब शाफ्ट रोटेट करता है तो हमारे पास शाफ्ट पावर आता है, तो रोटेशन ऑफ द शाफ्ट runs the generator, which converts shaft power SP means shaft power into electrical power. तो इस शाफ्ट पावर को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, और इस इलेक्ट्रिकल पावर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं. तो ये जो है ना, जब ये शाफ्ट पावर हम फीड करते हैं किसको, जनरेटर को, तो जनरेटर रन करता है, तो दैट कन्वर्ट द शाफ्ट पावर और मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर. सो इस तरह से ये जो है ना, ये रनर फंक्शन करता है, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट रनर एंड बकेट्स. आफ्टर दिस वी हैव दिस केसिंग. Third one is casing. Okay. Third one is casing. So इसको हम केसिंग बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवर. ये जो केसिंग है ना, ये इस पूरे सेटअप के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, ठीक है. acts as a protective cover of the whole setup of the whole setup of Pelton turbine. Whole setup of Pelton turbine. Okay, this is the first thing. Casing acts as a protective cover of the whole setup of Pelton turbine. First, and next is it prevents the splashing of water. And directs the water to tail race. तो इसका क्या फंक्शन होता है? फर्स्ट फंक्शन इसके होते हैं, ये जो है ना, इस पूरे सेटअप को, पूरे सेटअप के लिए इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवर, जो किसी भी एक्सीडेंट से इस पूरे सेटअप को बचाता है, ठीक है. एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द होल सेटअप ऑफ Pelton turbine. किसी भी एक्सीडेंट, इट प्रिवेंट्स द होल सेटअप फ्रॉम एक्सीडेंट्स. ओके,
तो नेक्स्ट फंक्शन इसकी क्या है? इट प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड इट गाइड्स द वाटर टू टेल रेस। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा कंपोनेंट थर्ड था। अब इसके बाद हमारे पास एक है पेन स्टॉक। फोर्थ जो हमारे पास है ना, फोर्थ वन इज पेन स्टॉक। So what the use of penstock? Penstock, we know it. Penstock, we know it. It supplies the water, or it takes the water from dam to the turbine. Or we can say it is the pipeline. It is the pipeline which carries. It is the pipeline which carries water from dam to turbine. Okay, penstock carries water from dam to turbine. The penstock is a pipeline that carries water from dam to turbine. तो फिफ्थ हमारा इसके अंदर कंपोनेंट है, दैट इज नॉट शोन हियर, यहां पे हमने उसको नहीं दिखाया, दैट इज ब्रेकिंग जट। That is breaking jet. That is breaking jet. तो यहां पे क्या होता है, जब वाटर जेट इसके ऊपर जब वाटर जेट इस वैन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं ना, इस टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं ना, दिस टरबाइन स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब जब हमें टरबाइन को स्टॉप करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस वाटर जेट को बंद करते हैं। ओके, हम इस वाटर जेट को स्टॉप करते हैं। ओके, लेकिन क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर हमने यहाँ पे वाटर जेट स्टॉप किया, ये जो रनर है ना, इट कीप्स रोटेटिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये चलता रहता है। तो इस रनर को शॉर्ट टाइम में रोकने के लिए हमें यहां से बैक साइड से, ऑन द बैक ऑफ द वेनस, हम यहाँ पे एक जेट स्ट्राइक करते हैं। तो इसकी जो अपनी रोटेशन होती है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और ये जो जेट स्ट्राइक करता है ये स्ट्राइक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये ब्रेकिंग, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का क्या है, ब्रेकिंग जेट की फंक्शन क्या है? ब्रेकिंग जेट की फंक्शन ये है कि ये जो रनर है ना उसको कम टाइम के अंदर स्टॉप करता है। ओके, तो ब्रेकिंग जेट हमने देखा यहाँ पे किस व्हाट द फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग जेट। तो क्या होता है, जब हमें इस टरबाइन को स्टॉप करना होता है तो हम यहाँ से ये जो है ना वाटर सप्लाई, इसको हम स्टॉप करते हैं, मगर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन दिस रनर कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम। To stop this runner in short span of time, we strike one more jet of water in the opposite direction, which that jet of water that we strike in the opposite direction, that stops the runner in short span of time. That reduces the stop time of this runner. Okay, तो यही जेट की फंक्शन होती है, ब्रेकिंग जेट की। तो इसके अंदर हम लिखेंगे so what is the braking jet? When the water supply to the runner
is stopped, when the water supply to the runner is stopped, the runner does not stop instantly. The runner does not stop instantly due to inertia of motion. Due to inertia of motion. So तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर to stop the runner in short span of time, to stop the runner in short time, a jet is supplied a jet of water is supplied in opposite direction, okay. So that jet of water is known as braking jet. That jet of water is known as braking jet. So that jet of water is known as braking jet. तो क्या होता है यहाँ पे, अगर जब हमारा ये टरबाइन है ना, जब इन ऑपरेशन होता है, ओके, तो क्या करते हैं, जब हम इस टरबाइन को ऑपरेशन के ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर हम इस टरबाइन को स्टॉप करते हैं ना, तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारा रनर है ना, ये रोटेशन के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये कुछ टाइम के लिए जो है ना रोटेट करता रहता है। तो इंस्टेंटली मतलब जैसे हम इसको जैसे हम यहाँ से वाटर सप्लाई स्टॉप करते हैं ना, उसी टाइम ये रुकता नहीं है, बट इट्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम। तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम इसको स्टॉप करने के लिए हम इस अपोजिट डायरेक्शन में एक वाटर जेट सप्लाई करते हैं ना, हम इस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक वाटर जेट सप्लाई करते हैं, तो दैट वाटर जेट इज नोन एज ब्रेकिंग जेट। So this was all about Pelton turbine, different parts and their functions। तो पूरे जो टर्बाइन है ना, इसकी ये कैसे फंक्शन करता है, यहाँ से वाटर हम सप्लाई यहाँ से पेंस्टॉक के थ्रू हम वाटर सप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो नोजल है, नोजल के अंदर जो वो वाटर है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इस नोजल के थ्रू वो जो वाटर जेट है ना, दैट स्ट्राइक्स ऑन दिस वेन्स। इस वैन पे स्ट्राइक करने के बाद ये जो टरबाइन है ना, ये जो रनर है ना, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। और इस टरबाइन जब वाटर जेट इस वैन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं ना, दिस रनर स्टार्ट्स रोटेटिंग। और यहाँ पे इस रनर के साथ एक शाफ्ट फिक्स होता है। जब ये हमारा रनर रोटेट करता है तो ये शाफ्ट भी रोटेट करता है। तो दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द जनरेटर। जब ये शाफ्ट रोटेट करता है, ये इस जनरेटर को भी रन करता है, बिकॉज ऑफ विच दिस शाफ्ट पावर, इस शाफ्ट के अंदर जो पावर है ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये हमारा पेल्टन टरबाइन था, इट इज कंस्ट्रक्शन एंड इट इज वर्किंग। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी इट इज वेलोसिटी डायग्राम। Okay, so that is all.